Am I audible and visible from the Deepak sir, can you hear me? मैम वॉइस आपका आ रहा है। आ रहा है सर, विजिबल है सर, कैमरा ऑन है? नहीं मैम, कैमरा आपका ऑन नहीं है। मैम मेरी तरफ से तो ऑन दिखा रहा है कैमरा। एक जस्ट मिनट, मैं एक बार ऑफ करके ऑन कर देती हूँ। मैम रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन फ्रॉम द 2 devices प्लीज। हाँ रिम्पी मैम, I अभी have आप joined from the 2 devices. डन 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 श्योर। Done ma'am, can you see me? Okay, I'm so sorry, बहुत कुछ टेक्निकल कंसर्न चल रहा है आई थिंक। नो वरीज मैम। हाँ, तो should I keep both the devices on? मैम कीप one device on with mute and one from unmute, and then if there is a technical glitch you can just shift to Okay. the another one. Okay, and the way we are doing it right now, will that you मतलब अभी आप you can hear me from one device only ना? मतलब Yes, there's yes, overlapping. I hope there's yes. not. Request admin to kindly make Rimpy ma'am from both the devices as a co-host. हाँ, we'll just share the screen और फिर देखते हैं क्या हो रहा है। Yes ma'am, now you are the co-host. Please share your screen once. Sure ma'am. I have one of helping me with this. Just a second. Done ma'am. Can It's visible. So we are now going to the actual one, Deepak sir. the screen on? Should I Thank you, Deepak sir. So a very good afternoon, one and all, and warmly welcome on the second day of 5 days faculty development program come workshop on life skill and soft skill for excellence at workplace. I, Parul Bhargav, the coordinator of this event, and honored to have Professor Dr. Raju Agarwal, sir, Director of Subodh Management Institute, Jaipur. Also, all the esteemed faculty members and our esteemed participants. Today, on the second day, we have among us the second day of speaker, Dr. Rimpi Sharma. But before that, stay tuned and have a ad of the institute. हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और एमबीए के लिए सुबोध मैनेजमेंट से बेहतर कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। जहाँ प्लेसमेंट गारंटी, स्कॉलरशिप, सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट के साथ आपको मिलेगा रीजनेबल फीस में क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा। सुबोध मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, मैनेज बाय सुबोध शिक्षा समिति एट शिप्रापत मानसरोवर। फॉर एडमिशन कॉल 9829844446। Thank you so much. So I again welcome Dr. MP Sharma.
Dr. Rimpi Sharma is a distinguished counseling psychologist based in Jaipur, Rajasthan, currently serving as student counselor at Manipal University, Jaipur. She plays a pivotal role in supporting students' mental health and overall well being. Dr. Sharma earned her academic credential from IIS University, where she cultivated a strong foundation in psychological principles and counseling methodologies. Beyond her institutional role, Dr. Sharma extended her expertise through her private practice, counseling by Dr. Rimpi Sharma, offered guidance to individuals facing emotional, career related, or other personal challenges. Her approach is characterized by empathy, a commitment to helping clients navigate their issues efficiently. Activate on social media platform like Insta, Dr. Sharma shares insight on mental health and wellness, aiming to delegitimize psychological counseling and promote self-practice. Her dedication to fostering a supportive environment underscore her mission to empower individuals in their personal and academic journey. From the Subodh Management Institute, welcome you, the second day speaker, Dr. Rimpi Sharma. Ma'am, the screen is yours. Thank you. Ma'am, please unmute yourself. You're not audible. Am I? Yes, ma'am. Just a minute, ma'am. I'll just mute from this other device. Okay. Um, Thank you so much, Parul ma'am, for inviting me for this session. And actually, I would like to also thank SSN Subodh Management Institute and Director Sir Professor Raju Agarwal for calling me for this session. Before I begin, can I just share my screen so that we can begin with our session? Sure, ma'am. Sure, ma'am. Just a minute. Is it visible now? Yes, ma'am. Visible. Okay. As far as my information goes, what we have so far done in this FDP is communication. We have covered the topic communication. So, extending it further, I think the next topic in this area is interpersonal relationship in workplace. See, interpersonal relationship works as a backbone of any healthy and productive workplace in any organization, especially in educational institutions like colleges, and effective collaboration between faculty, administrative staff, support staff plays a very, very important role. We have seen immense examples, like we can say how the collaboration of examination department with the teaching, with the admin, everything goes hand in hand and develop a प्रॉपर सिस्टम बिकॉज हम जानते हैं कि ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बहुत लिमिटेड नहीं होते, इनके बहुत लंबे प्रोसेसेस होते हैं और इन सब में आपस में कोलैबोरेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो वहाँ उस कोलैबोरेशन को एक पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. अलॉन्ग विद दैट आई वुड लाइक टू ऐड, हम जब भी किसी जॉब के लिए जाते हैं, हम जब भी किसी वर्क प्लेस पे जाते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हम किन लोगों से इंटरेक्ट करने वाले हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कोर्स एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. हम जाते हैं और देखते हैं अरे हाउ इज द इंफ्रास्ट्रक्चर लुक्स, व्हाट इज द सैलरी पैकेज एंड एवरीथिंग. वो सब चीज़ों के अपार्ट हम ये और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट देखते हैं कि हु आर वी एक्चुअली गोइंग टू इंटरेक्ट विद. हमारा पीयर ग्रुप क्या होगा, हमारा मैनेजमेंट कौन होगा, किन लोगों से हम मिलेंगे, किन से हम बात करेंगे. ऑल दोज एरियाज आर इम्पोर्टेंट, राइट? सो from there I think interpersonal relationship becomes an important aspect. We are humans, social interaction, social connections के बिना हम शायद आगे नहीं बढ़ पाते.
So that is what interpersonal relationship is. It's basically connection and interaction between two or more people in the workplace, in the work setting. They may be professional, friendly, mentor based, whatever kind of the relationship it is. और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है, जैसा हमने बोला, टीम वर्क, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल सर्कस। ये सारी चीज़ें अगर एक लाइन में होती हैं तो हम एक पॉजिटिव ग्रोथ पे फोकस कर पाते हैं, राइट? आई थिंक दैट्स एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। हम बेसिक के बारे में बात करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। दिस इज हाउ थिंग्स गो अराउंड। क्या हम डू वी हैव डू द पार्टिसिपेंट्स हैव एन एक्सेस ऑफ चैट बॉक्स? Ma'am, chat box is enabled. Anyone can message on the chat box. Okay, okay. But due to something I think I can't see on the screen, care any which ways. So I would like to do an activity. Will all be happy to do it? Ma'am, Um, there's at the downstairs, there down of the screen, there is a chat written over there. You can click when you can just see all the messages. okay, okay, ma'am. Is all the participants are able to speak in between if they want to? Can they unmute themselves? And admin, please allow everyone and enable the speaking audio. Is it done? Okay, so is it done? Yes, ma'am, it is. ओके ओके सो आई वांट यू, हम जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हम पोस्ट लंच मिल रहे हैं, तो थोड़ी सी एनर्जी हमें वापस जगानी पड़ेगी अपने अंदर। तो आई वांट वन थिंग दैट यू अप्रिशिएट अबाउट योर डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली और योर कलीग। एक वर्ड चाहिए, एनी वन कैन टेल मी वॉट इट इज। एनी वन? Ma'am, you can also check the chat box. Ma'am, because of something I cannot check the chat box. Deepak sir, have you allowed all the participant to unmute? Allowed है मैम। ठीक है, thank you so much. It's already allowed, ma'am. It's Okay, enabled. okay. So anyone can please share. Matlab they can unmute themselves and just say a word. We don't want किस colleague के लिए, we don't want किस department के लिए, nothing. Okay, Just ma'am, I one can word help that you. yes, I appreciate this quality. I can help you. Dr. Pragya Sharma said discipline. Ipsa ma'am said helpfulness. And Anil Very Kumar nice. ji, kindness. अरे वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सो ये बहुत सारी क्वालिटीज आपने दी हैं, तो ये सारी क्वालिटीज ही हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं। हेल्पफुल, काइंडनेस, आई थिंक इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज होंगी जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं, लेट्स मूव अहेड। सो now let's discuss what are the types of workplace relationship. I think ये सारे relations आपको पता हैं, मैनेजर एम्प्लॉय, या हम इसको अल्टरनेटिवली मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप बोल सकते हैं, जहाँ पे एक मैनेजमेंट है, एक हम हैं, जहाँ पे बात होती है सुपरविजन, गाइडेंस, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ऑल दोज पार्ट्स आर कवर्ड, राइट? जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय की, पीयर टू पीयर रिलेशनशिप, कोलैबोरेशन बिटवीन द टीम्स, टू बी इजी टू अंडरस्टैंड, हम जिनके साथ शायद लंच करते हैं, बहुत सारी गुड मेमोरीज, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, मस्ती करते हैं, आई थिंक वो होते हैं हमारे वो कलीग्स जो इक्वल होते हैं हमारे, और वर्किंग इन अ टीम, मेंटर मेंटी, नॉलेज ट्रांसफर, स्किल डेवलपमेंट, करियर गाइडेंस। आई थिंक एज अ प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, आपके पास ये मेंटर मेंटी के लिए तो बहुत सारा नंबर है, बट कभी कभी ऐसा नहीं होता, हमारे वर्क प्लेस पे भी हमारा एक मेंटर होता है, एक गाइड होता है, जो हमें बताता है कि इस तरीके से काम करना है, या कोई एफर्ट हम डालते हैं तो उसमें जो भी करेक्शन की जरूरत होती है वो हमें बताते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मैं भी बहुत सालों से काम कर रही हूँ, and आप लोग भी बहुत सालों से काम कर रहे हैं,
तो आई एम श्योर इस तरीके की एडवाइस आप लोगों को ज़रूर याद होगी, और ये हमारी लाइफ चेंजिंग एडवाइजेज होती हैं जो हमें हमारे सीनियर्स से मिलती हैं. दैट्स वन थिंग. नाउ ऐसा भी होगा जहां आप किसी के मेंटर होंगे, जहां आप किसी को गाइड करते हैं, जहां आप किसी को बताते हैं हाउ टू डेवलप. कोई नया है, अभी अभी करियर स्टार्ट किया है, हाउ टू गो अबाउट इट, व्हाट टू डू, हाउ टू मूव अहेड इन लाइफ, एवरीथिंग. यहाँ पे टू द बेसिक, कभी कभी हमें ये भी हेल्प चाहिए होती है कि यार, मतलब ये एक फॉर्म है, मुझे टू बी एग्जैक्ट मुझे लीव अप्लाई करनी है, वो भी हमें कोई गाइड कर दे तो बहुत अच्छा लगता है कि अरे ये ऐसे होता है प्रोसेस, राइट. सो दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप. देन वी हैव क्रॉस फंक्शनल टीम्स, पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट कोलैबोरेटिंग ऑन प्रोजेक्ट्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल नैक विजिट की बात करते हैं. आई थिंक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नैक विजिट से बड़ा कुछ नहीं होता है. तो जब हम नैक विजिट की बात करते हैं तो सारे डिपार्टमेंट्स दे कम टुगेदर, एकदम एक लाइन में काम करते हैं, कोलैबोरेशन बन जाता है, पूरा डिपार्टमेंट साथ आ जाते हैं. अच्छा, नैक विजिट भी मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया. आई थिंक एडमिशन टाइम्स भी वो वाला टाइम होता है जहाँ सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ आ जाते हैं, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एज अ टीम. वहां पे कोई नहीं बता सकता कि ये टीचिंग स्टाफ है, ये नॉन टीचिंग स्टाफ है, ये इस डिपार्टमेंट से और ये इस डिपार्टमेंट से नहीं है, ये एडमिशन हैंडल करता है, ये टीचिंग हैंडल करता है. नहीं, everyone works as a team because the aim is common goal. हमारा एक गोल है, एडमिशन्स आने चाहिए, हमें बच्चों को गाइड करना है हाउ टू गो अबाउट इट. या हम नैक का एग्जांपल ले तो हमें बेस्ट ग्रेडिंग मिलनी चाहिए. दैट्स द, उस वक्त हमारे कोई भी पर्सनल डिफरेंसेस नहीं होते. सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप वी हैंडल इन आवर वर्क प्लेस, राइट. नाउ अब इतनी सारी बातें कर ली, सब टाइप्स ऑफ वर्क प्लेस क्या होता है, हाउ डू वी गो अबाउट, व्हाट इज हैपनिंग, सारी चीजें. बट माय पॉइंट इज, व्हाट आर द बेनिफिट्स, राइट. कहीं ना कहीं बेनिफिट्स को लेके हम अपनी डे टू डे कॉन्वर्जेशन में कई बार डिस्कस कर लेते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है. ओके, बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्क प्लेस रिलेशनशिप्स क्या होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, टीम मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स टीम वर्क. टीम वर्क बहुत स्मूथ हो जाता है जहाँ पे हम अपनी बात बहुत क्लियरली रख सकते हैं, एंड द पीपल आर रेडी टू लिसन टू अस, पीपल आर ओपन टू लिसन टू अस. दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट. सो there the teamwork becomes easier. When I will put my things to my senior will put forward things to their senior, everything, this is how things will work. So the smooth collaboration and synergy is easier, राइट. सो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अलॉन्ग विद दैट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. जब हम अपनी बात को बहुत क्लियर और अच्छे शब्दों में बाहर रख पाते हैं या अपनी टीम से कम्युनिकेट इजीली कर पाते हैं. आई एम श्योर आपके सीनियर्स, सॉरी, आई एम श्योर आपके कल वाले सेशन में कम्युनिकेशन को लेके काफ़ी डिटेल में बात हुई है, तो वहाँ पे उन्होंने बताया होगा क्लियर कम्युनिकेशन, कंसाइज कम्युनिकेशन होना चाहिए. तो जब हम उधर कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन को हाईलाइट करते हैं, तो वी अंडरस्टैंड दैट देर आर फ्यूअर स्कोप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत कम कॉन्फ्लिक्ट हो पाता है. हम अपनी बात को बहुत बेटर तरीके से रख पाते हैं, और इवन इफ देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, उसका बेटर रेजोल्यूशन निकलता है. इनफैक्ट नॉट जस्ट रेजोल्यूशन, उस कॉन्फ्लिक्ट को लेके डिस्कशन, और वहीं पे उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर दिया जाता है, राइट. Then, of course, the morale boost, happiness, happier employees get greater motivation, of course. Oh my God, सुबह उठ के ऑफिस जाना है. Say, oh wow, आज न्यू डे, you have to go to the office. ऐसा कितने लोग फील करते हैं? I think I can't see the screen, but अकेले कदों की तरह बैठे हो. yes, hello. Okay, I thought somebody was saying something. So ऐसा बहुत लोग फील करते हैं कि ओके, ओ माय गॉड, सुबह ऑफिस जाना है, या से ओ वाओ, आई हैव टू गो टू अ न्यू डे, न्यू स्टार्ट, न्यू वर्क, राइट. तो ये एनवायरनमेंट हमें तभी मिलता है जब हमें लगता है हाँ यार, जिनके साथ मुझे काम करना है, दे आर देयर फॉर मी, राइट. दे आर देयर, आई हैव अ zeal टू गो एंड मीट देम. आज का क्या टारगेट है, कल तक क्या किया था. सो देयर इज अ मॉरल बूस्टर, ऑफ कोर्स.
knowledge sharing, like previously I mentioned, open communication leads to innovation. uh, I, being a junior, if I forward my concern to my senior and I would say that, I want to do something like this, or I want to do this in a particular way, if there is a correction, he or she will guide me, and he or she will tell me that yes, we can work upon it, or no, this needs correction, and this is how you can go ahead. Like previously I mentioned, all those tips, I remember from my guide, which I have gotten till date, and it is helping me throughout. So similarly, इन्हीं लाइंस पे जब नॉलेज शेयरिंग होती है, आपका आपके सीनियर आपको गाइड करता है, इनफैक्ट नॉट जस्ट सीनियर, एट टाइम्स द यू नो recently joined employee also contribute in a way that people say, oh my god, we don't know. When I work in my office and there's a new joinee and he tells me, ma'am, why are you using this software like this? This is not used. You can use it this way. And I say, wow, this becomes very easy for me. So all these learning, all this knowledge sharing happens only when there's no negative competition, right? There's a positive bond between the employees, right? Then, of course, if there is a good team building, there's less conflict, there is morale boost, knowledge sharing, then of course it results into the higher productivity of not only just the organization but for the individual as well. Right? Both the way it is important. अगर positive environment will lead to my performance better and will also lead to a positive environment for the whole organization, right? Because that's how it works, right? So all these are the major benefits of a strong workplace relationship, right? Even if you have any question, you can write in the chat box. I think Parul ma'am can ask me if there's anything. Okay. So, what are the key components of effective relationships? कुछ components होता है that combine and then make it a effective relationship. So the first and the most important is communication. Of course, uh, हम we are social being, है ना? We cannot live without communicating with people around us, right? So, but communication has to be very clear and respectful and honest, right? I want to say something and you have to understand it in the same way, the way I want to convey it. I think टीचर्स को ये बात समझाने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज वो रोज अपने बच्चों से उतना इंटरेक्ट कर रहे हैं और अपनी बात को क्लियर तरीके से उनके आगे रख रहे हैं. तो क्लैरिटी इज, आई थिंक, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर एस्पेक्ट ऑफ this profession. Then we have honest communication. If I'm happy with somebody's work, I should appreciate it. And if I think that this person needs some changes or something like that, I can always say this thing. But by honest, I mean polite, and I don't have to be rude to someone to say, oh my God, you don't know how to do it. I can always say, okay, you have done a good job, but I think you can, do better if you change, if you make certain changes, right? So this makes the other person like कि हाँ यार ठीक है, this person is understanding me, right? So that is one of the aspect, and one of the important thing, our body language. Like I mentioned, both verbal and non-verbal communication should be in line with each other. What will happen if I would say I am doing good in a language I am doing good? Nobody will accept it. Your body language doesn't show what you mean, right? So it has to be in both the ways. So I should be energetic, or whatever my statement is should be reflected from my body language as well. Then we have trust. Believe in someone's ability, truth, and reliability, right? We need to let other person do things whatever ways they want to do,
राइट? वी अगर करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? इफ यू थिंक दैट द पर्सन इज doing it wrong, then you should go and correct him. But if you think that the process might not work, let him or her try. If it doesn't work, you can correct. If it works, it's a win win, right? So we need to show trust to our colleagues, to our seniors, to our juniors, to everyone, right? That they can do it and they are doing it for something good. If something happens, we are there to support them, right? Then we have respect acknowledging others opinion, role, and contribution. We need to understand then from top to bottom everyone has their roles, their opinion, their contribution in the organization, from the management to the staff, uh, general services staff. We have everyone contribute in the organization, so we should acknowledge, accept, and respect their contribution, right? Empathy, the most important aspect, understanding and sharing the feeling of others. I understand what person is going through. That's very important. Empathy simply means putting yourself in someone else's shoes, right? So I understand what you are going through. And if I understand what you're going through, I will be able to help you in a better way, right? If I'm struggling with certain things, if I say that, okay, uh, if I can't do anything, yeah, I have certain tasks which I cannot perform at particular time, right? I'm going to my superior and telling him that I can't do it. So he will understand me and he will say, okay, fine, I will manage, right? या ऐसा होता है ना कई बार, आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी होता होगा कि कोई क्लास है और due to some other engagement you are unable to manage, so you will request your colleague, please take over my class so that I can do my other responsibilities. Your colleague understands and says, he has a lot of responsibility, okay, I'll take it. So this is what empathy is. You are understanding each other's feeling, you are understanding each other's responsibilities, and you're respecting that, right? Then it's mutual understanding, aligning perspective, working together on shared goal. Like I mentioned, जब admissions होता है, जब NAC visit होता है, या anything like that happens, what we do is we come together, और कोई नहीं बता सकता ये different department है, they are from admissions, they are from non-teaching staff, they are teaching staff, who was there, they all come together, they work in line, like, and they give their best, right? Annual functions होते हैं, so all those events bring all the employees in the organization together, और वहां पे एक अच्छा bond develop होता है, right? Rimpi ma'am, that the session is going wonderful. I just request that you already shared the screen, but we are not able to see all the slides. So if you Okay. change the slides and make it a full screen, that will be great. And till the Rimpi ma'am do this, let's have a break. हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और एमबीए के लिए सुबोध मैनेजमेंट से बेहतर कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। जहां प्लेसमेंट गारंटी, स्कॉलरशिप, सेफ एंड हेल्दी एनवायरमेंट के साथ आपको मिलेगा रीजनेबल फीस में क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा। सुबोध मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, मैनेज बाय सुबोध शिक्षा समिति एट शिप्रपत मानसरोवर। फॉर एडमिशन कॉल 9829844446। हार्डवर्क का कोई Great. Thank you, everyone. Ma'am, you can continue now. Please unmute yourself. Sure, ma'am. Just a Thank minute. you. Could you just tell me that if the screen is visible or not? Not yet, ma'am. Okay. Just a minute, ma'am. Sure. Yes, now it's visible. And Okay. make it Can you visible. see the role of emotional intelligence written on the screen? Definitely, ma'am. Definitely. You can also do the full screen from the downside. There is a cup set is there at the down right side.
Ma'am, I've shared it on my screen. It is full screen No only. worries, ma'am. Please continue. Okay, okay. It's completely visible. The role of emotion. Thank you. Okay, okay. Should I start? Yes, ma'am. Please, please. Okay, okay. So the next topic we have is role of emotional intelligence. I'm sure management के लोग सब जानते हैं emotional intelligence. Just a minute, can I have a sip? So role of emotional intelligence is very important. बहुत basic concept है. Availability, ability to understand and manage own emotions and recognize others. We are actually trying to understand our emotion along with the other emotion. uh, ये बहुत important है as an individual. When I am at home with my family, with the people around me, and in my workplace, both. As an individual, I think this is one of the major important aspect of every individual's life, that is emotional intelligence. सो इसका फर्स्ट कंपोनेंट है सेल्फ अवेयरनेस, रिकग्नाइजिंग योर इमोशन एंड देयर इफेक्ट. First of all, you need to understand that what you are going through, right? And how does your emotion affect, right? So ये बहुत important है to understand. At times it happens that we feel stressed, we feel there is a presentation going to happen, or there is some kind of team is coming for an inspection, right? So all these things are happening and we feel stressed. So what we do is we just take a deep breath, we just go out, take a walk, calm ourselves, and this will help us in managing our reaction. What we'll do is we'll control our stress. हमारा स्ट्रेस रिलैक्स हुआ थोड़ा सा, हमें लगा हाँ यार आई वॉज फीलिंग स्ट्रेस, आई रिकग्नाइज्ड माई इमोशन एट दैट टाइम, एंड आई नो in that stress I might say something that is not appropriate to say in that situation. So what I did is I went out, I took a walk, I relaxed myself up, I calmed myself, and then I came back and I was like, okay, now I'm control, now I'll manage. Mm. Right, then we have self regulation, managing emotions constructively. um, there is a situation where we get a negative feedback, right? What happens is किसी ने बोल दिया कि यू नो ये तरीका सही नहीं था, या ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं काम करना चाहिए था. What happens is that we get upset about it, we get a little low about it. So rather than feeling that ways, I think what we can do is we can say thank you so much for your feedback, and now I will work, I will try to improve myself and work in a different direction, right? So managing emotions constructively comes under self regulation, जहाँ हम समझ पा रहे हैं कि हाँ ठीक है, something happens, and if even it's a negative feedback, it's for our betterment. How will we learn if nobody will tell us that this is wrong, yeah, this needs improvement? तो जब तक हमें बताएगा नहीं कोई हमें हमारी गलतियां, तो हम सीखेंगे कैसे? आई थिंक दैट्स व्हाट वी डू व्हेन आवर स्टूडेंट अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, वी चेक, वी स्कोर. ऐसा तो नहीं है ना हमें लगता है हमारा बच्चा है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पास कर देते हैं. ऐसा नहीं होता ना, हम उन्हें बताते हैं कि नो यू आर रॉन्ग इन दिस, ये गलत लाइन लिखी है, इसको इम्प्रूव करना चाहिए था, राइट? तभी तो इम्प्रूवमेंट का स्कोप है. सो सेल्फ रेगुलेशन इज दैट. मोटिवेशन, स्टे ड्रिवन टू मीट गोल्स. बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है बंदा, बहुत मोटिवेटेड है, आगे बढ़ रहा है कि भाई हाँ मुझे एक एग्जाम्पल सेट करना है ऑर्गेनाइजेशन में, है ना? अ, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, राइट? देन वी हैव एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशन एंड व्यू पॉइंट. लाइक आई मेंशन दैट we need to understand other person. Let's say that I see one of my subordinate doing certain things in a not so proper manner, I would say. Not wrong, but not so proper manner. So rather than highlighting that in the meeting, I would ask them, yeah, come to me in private,
And then the person comes in and says, so no, you are doing good, but you can improve on these points. And the person will say, yeah, thank you so much, ma'am, you highlighted this point. And then the person leaves. So I understand that if I would point out this mistake uh, on, on the bigger platform in a meeting in front of management, this would not go, this he would not feel good about it, right? So I can always make that person understand, okay, ठीक है यार, अब हम इसे अकेले में बैठा के समझा सकते हैं, right? Then we have social skills, build rapport, influence other, managing conflict, of course. uh, एक एक सीनियर टीचर या एक मैनेजमेंट क्या करते हैं कि वो, इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, वो वहां जाके उसको सुनते हैं दोनों जनों की बातों को और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, इसको हम इस तरीके से रिजॉल्व किया जा सके. जैसे यू रिमेम्बर, मतलब फादर्स रोल इन सिबलिंग्स, कोई कोई डिस्कशन हो गया एंड पापा विल कम एंड टेल, ओके ओके यू बोथ आर राइट नाउ, फॉरगेट इट, वील हैंडल इट दिस वे, राइट? सो समथिंग लाइक दैट. इस तरीके का एक सोशल स्किल कंपोनेंट भी होता है जहाँ पे हम बताते हैं कि हाउ वी कैन मैनेज, right? So EQ is basically the foundation of healthy interpersonal dynamics, especially in stressful and complex situation. We know how to manage ourselves if there, there are often situations जहाँ पे हम बहुत stressed feel करते हैं. We feel that, there are things that are happening and we are unable to manage them, right? तो वहाँ पे EQ plays a important role. अब बैरियर्स क्या होते हैं? तो जो भी बेनिफिट्स थे वही डिफरेंट वे में बैरियर्स बन जाते हैं. जो हमारे की कंपोनेंट्स हैं, पुअर कम्युनिकेशन, मिस इंटरप्रिटेशन और लैक ऑफ क्लैरिटी. हम अपनी बात को क्लियरली नहीं प्रेजेंट कर पाते, वी आर अनेबल टू से व्हाट इज हैपनिंग, या फिर इसने मेरे को ऐसा बोला, अब मैं ना, ठीक है, आई विल टेक रिवेंज, ऐसा नहीं होता है. सो ये एक बैरियर की तरह काम करेगा. इफ देयर इज अ डिस्प्यूट, इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, we can talk about it and we can discuss it, right? Healthy competitions are always welcome. Cultural differences होते हैं, communication style का तरीका अलग होता है, customs अलग होते हैं, work ethics अलग होते हैं, सबके अपने अपने होते हैं. किसी को एक सर्टेन वे में काम करना अच्छा लगता है, किसी को दूसरे तरीके से, तो वहां पे क्लैश आ सकता है. पर्सनैलिटी, कोई बहुत एक्सट्रोवर्ट है, किसी को बात करना बहुत पसंद है, किसी को बात करना नहीं पसंद है, सो इट कुड बी अ इशू. तो वहां पे हम साथ आके, यू नो वी कैन सिट टुगेदर एंड रिजॉल्व दिस कि हाँ ठीक है, ओके, हम इस तरीके से एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेंगे. लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, अगेन डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, खुद के इमोशंस नहीं समझ में आ रहे हैं, दूसरों के नहीं समझ में आ रहे हैं, ठीक है जो हो रहा है जैसे चल रहा है. पावर स्ट्रगल्स, कंपटीशन इंस्टेड ऑफ कोऑपरेशन, एक अनहेल्दी कंपटीशन है, आई वांट टू बी ऑन द टॉप, आई वांट टू बी ऑन द टॉप. ये सारी सिचुएशंस जो होती हैं वो बैरियर्स की तरह काम करती हैं. तो आई वुड नॉट हाईलाइट देम. लेट्स मूव अहेड. क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, हम उस पे काम करते हैं. हम, हमारा माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव है, वी आर फोकस्ड ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ एवरीथिंग, राइट? सिचुएशंस हम सबको पता होती हैं कि क्या क्या कंसर्न्स आते हैं, क्या क्या सिचुएशंस हम झेलते हैं, क्या क्या होता है. तो आई थिंक वी शुड मोर फोकस ऑन स्ट्रैटेजीज टू इम्प्रूव. How can we? Listening, active listening. Pay attention, show you are listening, respond thoughtfully. Very important. हमें बिल्कुल एक्टिव लिसनर की तरह काम करना चाहिए. If somebody is asking us or somebody is telling us something or they are instructing us, we should be active in listening whatever the person is saying, right? Second, we should have constructive feedback. Focus on behavior, not personality. There is a situation where you would say कि okay, ठीक है, एक सिचुएशन है, उस स्ट्रेस सिचुएशन है, किसी ने थोड़ा सा एंगर दिखा दिया, इट्स ओके, दैट्स नॉट हिज और हर पर्सनालिटी. ये एक सिचुएशन थी, हो गया, कोई बात नहीं, वी कैन फोकस ऑन इट एंड वी कैन ऑलवेज टेल दैट पर्सन कि ओके ठीक है, ये एक सिचुएशन थी, यू शुड ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ, काम योर डाउन, इट्स ओके, सिचुएशन विल हैपन एंड we'll get over it, right?
Appreciation, acknowledge other person, like we previously talked कि appreciation is must. Trust me, बहुत morale boost होता है. सिर्फ एक statement you did good feels, मतलब till date, if I do some activity and my superior or my colleague say you did good, it feels like okay, ठीक है, you know, it feels, it makes you feel happy कि you have put a lot of effort and you know, uh, ठीक है, now my effort has been acknowledged, right? Open mindedness, we need to accept that there are very different viewpoints, बहुत सारी चीजें होंगी, जितने लोग होते हैं हम कहते हैं ना उतने व्यू पॉइंट्स होते हैं, राइट? सो इसमें कोई क्लैश नहीं है दैट हाउ कैन यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन एंड हाउ कैन आई नॉट हैव द डिफरेंट ओपिनियन. इज द स्लाइड चेंजिंग, मैम? No, ma'am, it's still same. Okay, just a minute. Actually, I saw on the other device now. Okay, no So worries. I thought ki, I think, can you see the, I Say can, strategies to improve interpersonal now, relationship. now is it visible, the current slide which we are working on? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank Okay. you. Huh. So, so that is the concern. Uh, so everyone is so good now. Nobody was even pointing out that the slide is not changing, or I am unable to see the chat box. That's why. Uh, so technology, I think. No worries, ma'am. Actually, your session is too good. Everyone can listen and listen just. I would thank you so much. आपने मेरा अभी अभी जो morale boost किया, appreciation use No, no, करके. ma'am. You just definitely going well, and it's a really good session. Please carry on. Thank you. Thank you so much, ma'am. Okay, so I have time. So I was just wondering how actually it was helpful because I saw on the other device that no, the slide is not changing. Okay, okay. Now we have conflict resolution. Deal with the issue early, respectfully, and close it out. Right, that's the most important aspect. बहुत प्रोलॉन्ग रखते हैं तो वो इशू बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, फिर वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है. सो इवन इफ देर इज अ थिंग, if not just in the organization, on your personal front as well, if you have any concern with anyone, just talk about it. Trust me, जो आपने सोचा होगा वो कंसर्न ही नहीं होगा, वहां कुछ और ही बात पता चलेगी आपको, राइट? तो टॉक अबाउट इट, प्रमोट टीम वर्क, कोलैबोरेट एक्टिविटीज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ऑफ कोर्स कोलैबोरेशन के साथ काम करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे. आई थिंक दैट्स अनदर एस्पेक्ट विच इज इम्पोर्टेंट, राइट? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक थोड़ा सा ब्रीफ में ही बात कर पाएंगे, लेकिन ठीक है. अर्ली इंटरवेंशन, लाइक वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, डोंट लेट द इशू फेस्टर, फोकस ऑन इंटरेस्ट, फोकस ऑन इंटरेस्ट, आस्क व्हाट पीपल रियली वांट. जब भी कोई एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, वी कैन ऑलवेज गो एंड टॉक अबाउट इट कि okay, if there is a conflict in interest, if there is a concern, we can always ask what do you want, not just the position but anything else. What is happening, what are the major concern in that, you know, conflict. Use of I statement, avoid blame. There are situations where when team of 10 are working together and due to some personal concern one of your team member is unable to perform, rather than highlighting, we can, I think, as a team take a blame. Okay, ठीक है, कुछ नहीं हो गया, एक काम छोटा सा रह गया है, we will as a team will complete it. That person will definitely feel the part of the team and will always tell you that, you know, thank you so much for being there. Because at times it happens कुछ personal reasons से, कुछ some reasons से वो उतना contribute नहीं कर पाते हैं. तो ट्रस्ट मी, सिचुएशन सबके साथ कभी ना कभी आती है, तो कभी हम नहीं कर पाएंगे तो वो हमारे लिए होंगे, राइट? Empathy and active listening, we have talked about it a lot of time. Professional mediation, right? जब लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा
कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है तो एचआर or your senior management needs to be involved. You can always go and talk to them that there is a concern and I'm struggling with. So, they can always talk about it. Handling the conflict constructively. राइट रिकग्नाइज अर्ली साइंस ऑफ टेंशन. हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, बार बार कंटिन्यूसली वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन थिंग, दैट इज अर्ली साइन ऑफ टेंशन. जल्दी पकड़ना है उसे, जल्दी से काम खत्म करना है बात करके. राइट. स्टेप्स थ्रू रिजॉल्व, स्टे काम एंड प्रोफेशनल. अपनी सिचुएशन में इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज स्ट्रेस, there is a heated argument about to happen, stay calm and professional. Focus on behavior, not on personality. Like I said, there is a situation, the person is reacting, it's okay. That person is not like that. Listen actively and seek a common ground. एक सिचुएशन पे कॉमन ग्राउंड पे आके हम आगे बात कर सकते हैं कि ठीक है, अब कोई बात नहीं, एक सिचुएशन हो गई है, इसको खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं. Building and maintaining strong relationship. What are the best practices? Be approachable. Be approachable for everyone. जो भी हमारे पास आके बात करना चाहे वो ओपनली हमसे बात कर सकता है. So we should be approachable and inclusive. If somebody comes with a pointer, I would always accept the pointer and make the person feel part of the team. Set boundaries while being friendly. आपको पता होना चाहिए कि what are the boundaries, but that doesn't have to be told rudely. I can always say this friendly that this is my boundary. Beyond this is not right. Uh, my concern. Appreciate and recognize contribution. Like I again mentioned, uh, ask for and give feedback constructively. If somebody asks for a feedback or you have to give a feedback, you can always give a constructive feedback. You can always say that it's easy to say अरे तुमने गलत किया है, but I know it's difficult to say that you did it right, but you can improve. But trust me, the second statement will be more effective in maintaining and building relationship, not just here, in your personal areas as well. uh, आप में से बहुत लोगों के बच्चे होंगे तो आप बोलेंगे बच्चों को तुम अच्छा नहीं कर रहे हो तो वो डिमोटिवेट होंगे. अगर हम बोलेंगे तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और अच्छा कर सकते हो, राइट, अगर तुम थोड़ा और एफर्ट डालो. आपके पर्सनल बच्चे नहीं, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी, उनको भी हम इस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं. राइट. व्हाट आर द टूल्स दैट कैन बी हेल्पफुल इन फॉस्टरिंग रिलेशनशिप? टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज हम कंडक्ट करा सकते हैं. आई थिंक आप सब इनिशिएट कर सकते हैं फन एक्टिविटी, रिट्रीट, गेम्स कॉलेज के अंदर फ्री होके कि हाँ यार ये कुछ एक छोटा पिकनिक ऑर्गेनाइज करना चाहिए जहाँ पे सब साथ जाएं. दे हैव अ फन एक्टिविटी डे, पिकनिक काइंड ऑफ. check-ins, regular one-to-one meeting और feedback loops लिए जा सकते हैं. Meetings encourage open discussions and participation of everyone. Right. Recognition programs celebrate wins and effort. If somebody has done good, we celebrate. If somebody has done good but has not achieved anything out of it, we can at least identify the effort. Right. क्रॉस डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, फॉस्टर कोलैबोरेशंस हो सकते हैं. हम रिसर्च पेपर्स और इस तरीके में और डिपार्टमेंट के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं. सो all those activities can be done. And last is, I think, second last slide. Interpersonal relationships are essential for productive, collaborative, and healthy workplace. These are the summary, I think I would say. Interpersonal relationship are essential for productive, collaborative, and healthy workplace. Of course, हम ये सारी चीज़ों के साथ होंगे तो प्रोडक्टिविटी, कोलैबोरेशन, हेल्दी वर्क प्लेस, नॉट टॉक्सिक, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट हमें मिलेगा. Everyone plays a part of employee. Everyone should play part. Employee, leader, HR,
all of them together makes a productive and healthy workplace, not just one. अगर हम सोचेंगे सिर्फ management has to play the role, नहीं. If we'll say employees has to pay the, nahi, everyone together have to come. Focus on communication, empathy, trust to build a lasting workplace bond. ये बहुत important है. Communication हमेशा open होना चाहिए. We should try to understand what our other colleagues are facing. We should trust, right? And the lastly, uh, all these things will come together and make a healthy environment. I think last is a quote from Henry Ford saying, coming together is a beginning, keeping together is a progress, and working together is a success. I think I would end my presentation with this note. Thank you so much, ma'am. Really, it's really wonderful and very informative session you have delivered. I request all the participants, if you have any query, we have 30 seconds. You can unmute yourself and ask from ma'am. Or you can share on chat box also. Okay, Dr. Manish Srivastav said it's a very nice presentation, ma'am. Thank you so much, sir. So do we have any question, participants? All right. So thank you so much. This is the second day with Dr. Sharma, ma'am. Thank you. It will be really very elaborative and informative. So, dear participants, tomorrow we have the third day session with again a wonderful speaker. So stay tuned, and we will be meet you tomorrow at the same time. Thank you very much. Thank you, Rimi ma'am. Thank you, director sir. Because of you, this is all we just get the so much information and learning from this FDP and all the participants. Thank you for your time. Have a good day. Thank you so much. Thank you.